Assalamu alaikum. Last time, what did we do? Like, could you bring me up to speed? We started with the causes of phobia, and Phobia. we were doing Dr. Watson experiment. So, सर आप हेल्थ साइकोलॉजी भी कराएंगे? yep, after abnormal. Abnormal के बाद. Oh, Do we have another student? Like, heck? Yeah, I don't think so. Let me just message it out there. We'll wait 2 minutes, ठीक है? Then after that we'll start. 2 minutes रुक जाओ. All right. Yeah. So phobia, ठीक है, classic conditioning, ठीक है, by Dr. Watson. All right. Now moving on, ठीक है, now continuing from what we did last time. All right. So this is a paper 4 question, ठीक है ना, paper 4, section C question jump. At the end of the day you'll have to construct a debate. So even though Albert was just one child,
The classical conditioning explanation of anxiety disorders can be applicable to anyone. All right, so like you have to argue, is it applicable or is not applicable? Well, ठीक है. Well, you can say that it's not applicable because Albert was just one child, ठीक है ना? So basically, uh, you can quote other explanations of phobia, ठीक है ना? That we're just going to discuss after this question. So you can like discuss other explanations phobias out there कि नहीं यार सिर्फ इससे नहीं होता दूसरे तरीके से भी हो सकते हैं ठीक है ना सच एस इसकी रिसर्च जो अभी हम करेंगे फ्रॉइड ने बोला है या अभी डेनाडो क्या नाम आएगा राइट लाइक डेनाडो सेज दिस so phobia can be instilled in this manner instead of the behavioral explanation so other researches would be your point against this question okay for example like फ्रॉइड अभी आएगा ठीक है ना उसके बाद डिनार्डो अभी आएगा ठीक है उसके बाद जो है लाइक वी आर गोना हैव द जेनेटिक एक्सप्लेनेशन ऑफ फोबिया सो ऑल दीज ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस आर गोइंग टू काउंटर आर्ग्यूमेंट के नहीं यार बिहेवियर एक्सप्लेनेशन के अलावा और तरीके से भी आ सकते हैं दैट्स अंडरस्टूड ऑलराइट now what can we do to support this argument like how can you say okay, yes explanation that is classical conditioning is applicable for everyone it's not just applicable to Albert all right well you can say that see uh अभी जब हम therapies पढ़ेंगे right तो one thing you have to keep in mind there's a therapy called systematic desensitization ठीक है तुम ये लोग कर चुके हो यू हैव स्टडी सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन तुम लोग बस पता नहीं कि तुमने सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन पढ़ा हुआ है तुम्हें अगर बटन फोबिया वाली स्टडी याद होगा द एंटायर ट्रीटमेंट मेथड two type of treatments were there in the button phobia study right there's the imaginal exposure right and the other one was called the behavioral exposure do you guys remember that ये भूल के सारा ये the imaginal exposure and या इन विवो इन विट्रो ठीक है ना ठीक है या अच्छा बिहेवियर वाला कौन सा था इन विवो था या इन विट्रो था chat इन विवो आई थिंक ओके 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 कहाँ गया या yeah this one ठीक है ना this one the behavior focus approach right the kid is going to be alone in the room right he's going to touch some buttons after he touches some button he gets some positive reinforcement right so see the positive reinforcement is what's gonna happen is getting associated with the buttons. He touches the button, the mother comes in, gives him the positive reinforcement. It's like classical conditioning all over again, right? The button is something that is harmful for the kid, so you're associating something positive with the buttons so that the kid doesn't stop fearing the buttons. So if you think about this, right? Uh, different therapies also use classic condition to treat people and ये जो सवेरा सिल्वरमैन की स्टडी के अंदर जो पूरा जो प्रॉपर नाम है इंस्टेड ऑफ द इन वीवो इन विट्रो इसका नाम पूरा प्रॉपर नाम सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन होता है राइट सो इफ यू थिंक अबाउट दिस इफ वी यूज सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन फॉर many people out there to make them get over their phobia इसका मतलब है कि this explanation is applicable for many people otherwise why would we use this treatment for different types of phobias so because we're using this as a treatment for phobias it means that classical conditioning principle is applicable to people. Is that clear? Or like Sargo Persecutary, which one is it? Where it does not apply to everyone, many patients do not respond well to it. That is going to be a counter argument. That is going to be the counter argument, ठीक है ना? कि तुम you can even take Severin Silverman's study as an example as well कि यार ठीक है हम हर किसी को अप्लाई तो कर सकते हैं लेकिन यार समीर सिरमन की अगर हम स्टडी को देखें तो बच्चा जो था उसको
इस तरीके से ट्रीट नहीं होता जब भी हमें cognitive exposure वाली थेरेपी मारनी पड़ी. तो not everyone responds to it very well. So that's gonna be your counter argument as well. ठीक है ना? So we're not saying that it's effective for everyone. We're saying that it's applicable to everyone. जब तुम application बात कर दोगे, that's gonna be your point for. But when you come down to the effectiveness, that could be your point against. That does that make sense? All right. So that's one point in support, right? We need another point in support. Because the rule is 2 points for and 2 point against. All right. So what else can we think of that can support this view? Classical conditioning wala. All right. Therapy की बात तो होगी. All right. You can also say that. Sir, most of the time phobias are learned. So little Albert did develop it as a part of a learning process. तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि हम learn करते हैं. It's not innate in us from when we are born. All right. So yes, I understand where you're coming from. लेकिन थोड़ा सा uh, elaborate करना पड़ेगा to make your point count. So the argument is that the phobias, the majority of our phobias are learned, and like they're not innate in us. All right. So you're gonna have to state some example to make your point better, like fear of what you can say that like uh Little के example दे सकते हैं हम. apart from Little Albert, apart something else, apart from Little Hans, Albert. Hans, the boy with the horse. नहीं, that's Freud. फिर वो काउंटर हो जाएगा क्योंकि that is Freud's का बच्चा. वो फ्रॉइड का बच्चा है. वो वॉटसन का बच्चा नहीं है. We can even use button phobia again, right? The kid got feared of buttons, right? ये button phobia. Let's look at how he developed phobia. Thing is कि भाई classroom में like था उसके सर के ऊपर बटन गिर गया, right? And now सर के ऊपर बटन गिरने की वजह से he has fears of buttons. Why? क्योंकि he finds that the buttons are disgusting. All right, so by having the story in front of us, ठीक है ना, कि the kid is not scared कि उसके ऊपर बटन. You guys do know that the kid is not scared कि उसके ऊपर बटन गिरने की वजह से उसको डर लगता है. He is now scared क्योंकि buttons को disgust लगता है. You do know that, right? He is not scared of the buttons कि उसके ऊपर दोबारा गिर जाएंगे, इसकी वजह से डर नहीं लगता. He is scared क्योंकि he finds them disgusting. ये clear है तुम लोग के दिमाग में? From a yes. हलीमा, ये तुम्हारे दिमाग में clear है? All right. So what I'm getting at is if he was scared that whenever he looks at encounters buttons उसको सर के ऊपर दोबारा गिरेगा, if it was that, right, then that would come under operant conditioning ka, like buttons, negative outcome, being scared of consequences. If you remember last class, being scared of consequences is operant conditioning. लेकिन यहाँ पे he's not scared कि इसके सर के ऊपर दोबारा buttons गिरेंगे. He's just scared because now he finds button disgusting. So actually, if you think about it, button के साथ disgust जुड़ गया, right? Something negative got associated with the buttons. So if you take that perspective, the way he developed phobias because of buttons comes under the classic conditioning approach. So we can say that, you know what? Yeah, little Albert ka phobia, white rat-phobia may not be applicable, but we can say that the underlying mechanism of classic conditioning is applicable to other people. Their object of what they fear might be different, but the entire mechanism remains the same. For example, in this case study by Simon and Silverman, जो बच्चा था, yeah, we don't, I think Jason, I don't know whatever his name was, he developed phobia because he associated disgust with the buttons, which goes to show that classic conditioning was at play. Hence, the explanation of classic conditioning is applicable to other people in respect to how they develop their phobia. So that would be another point to support the question. Is that clear? Yes, the confusion with the. All right. You guys do know that ठीक है ना, we have 2 point against, sorry, 2.4, 2 against
मिल जाएंगे, अब जब हम फ्रॉइड डिस्कस करेंगे, राइट, अभी हम दूसरे थ्योरीज डिस्कस करेंगे, मिल जाएंगे. So at the end, you're supposed to do a conclusion. Do for and do against it, and at the end of the day, you have to write a final paragraph, the fifth paragraph, that is the conclusion, in which your answer, in which the paragraph is going to be neutral. Again, it's not supposed to side with any side of the argument. Beach में रहना, neutral रहना, right? You're not supposed to introduce new points वरना दूसरा argument खुल जाएगा. You're not supposed to repeat previous points क्योंकि फिर हम दोबारा पीछे चले जाएंगे. Conclusion मतलब है यहाँ पे बात खत्म करनी है. So the way you're gonna conclude the question is कि the classical condition explanation for phobia ठीक है ना, may be applicable to many people. So yeah, but there could be some cases where people may develop phobias differently. However, we should not disregard the behavioral explanation of phobias, as it may help us and develop treatment programs that could help reduce phobias using behavioral based treatments such as systematic desensitization. Uh, but all in all, we should be open to other explanations as well, not to limit our scope. So like in conclusion, what I'm saying is we agree that the behavioral explanation does apply, but we're saying to keep an open eye for other methods and explanation as well. That's gonna be your conclusion. So दोनों side को तुमने खुश कर दिया. All right. Describe how a different phobia can be explained through conditioning, right? So, the question is, कि fear of blood injections are common phobia. Describe how a different phobia can be explained through conditioning. So you're supposed to explain any phobia apart from these two. Blood and injection के अलावा, is there any phobia that you can explain through classical conditioning? Yes. Button phobia, इवन एल्बर्ट का वाइट रैट वाला फोबिया, ठीक है ना, यू कैन एक्सप्लेन इट क्योंकि वो ब्लड इंजेक्शन फोबिया नहीं है. सो बेसिकली यू सपोज टू एक्सप्लेन द एंटायर mechanism, right, of classical conditioning using any other object other than blood and injection phobia. So that's why neutral stimulus, conditional stimulus, unconditional stimulus का पूरा process याद करना है तुम लोगों को. Now we come out to second explanation for phobia, right? Freud. हम OCD कर चुके हैं क्या? Did we do OCD? I think we did OCD. Khair. All right. So Freud comes again. ठीक है ना, पहले OCD के अंदर आता, now he comes under phobia. Good thing about Freud is कि उसकी ideas change नहीं होते, उसके वही ideas होते हैं, right? तो अगर OCD का explanation याद है तो तुम्हें phobia में भी मसला नहीं होना चाहिए. All right. So in Freud we have another case study of little Hans. So yeah, so please don't confuse little Albert with little Hans. Hans is Freud ka bacha, or Freud ka test subject. So one day what happens, the entire story is कि little Hans के जो अब्बू होते हैं, right, the father of little Hans, Freud का दोस्त है. So he comes to Freud and says कि यार मेरा बच्चा जो है ना उसको कोई ना कोई मसला है, आके देख लो. Freud agrees क्योंकि वो बाप का दोस्त है, तो बाप के दोस्त के बच्चे के पास जाता है. Little Hans के पास पूछता है भाई क्या मसला है. Turns out that little Hans is scared of horses. इसको horse phobia हुआ है, घोड़े का phobia हुआ है. अब you need to understand that this is 1909, right? And उस वक्त psychology इतनी develop नहीं थी. So there are not much theories out there. There's not much scientific development. So Freud अपने हिसाब से या अपने ज़माने के हिसाब से बहुत advanced था या बहुत unique था. So like Freud पूछता है भाई हांस से भाई घोड़े का वो किस तरह डेवलप हुआ. द स्टोरी इज के हांस और उसके अब्बू एक दफा गुजर रहे थे, राइट. व्हाट हैपेंस के घोड़ा उसके सामने गिर गया था, ठीक है ना, जोर जोर से आवाजें मारना शुरू हो गया था क्योंकि उस वक्त हॉर्स कैरेजेस चलते थे. तो रोड पे घोड़ा फिसल गया और फिसलने के बाद जोर से चिल्लाने लगा. एंड हांस देन डेवलप्ड फियर ऑफ हॉर्सेस. वो सीन देखने के बाद मेक सेंस. लेकिन फ्रॉइड कहता है यू नो व्हाट, I don't believe that. क्योंकि Freud is Freud. Freud कहता है कि there is something else going on. So he then tries to find out why did Hans develop horsephobia. Freud कहता है गहराई में और कुछ चीजें छुपी हुई हैं.
So Freud's first conclusion is that you know what, जो घोड़ा जो है ना बाप से मिलता जुलता है. सही है. If you think about this picture of the horse and जो father की शक्ल थोड़ी बहुत मिलती जुलती है. So Freud says that little Hans is actually not scared of horses. Little Hans actually has a problem with that. उसके बब्बू है उसके साथ मसला है. लेकिन you know if you think about it, little Hans is a kid, and for a kid to realize that I have a problem with my dad बहुत ज़्यादा overwhelming होता है, right? He cannot handle that pressure वरना शायद उसको mental breakdown हो जाएगा. So what he does is he, instead of getting scared of his father, he transferred that sphere. Keyword displaces. Okay? Displacement. Placement होता है उसको displace कर देते हैं. He displaces या transfers that fear onto horses. Now, one thing's clear. बाप से मसला था उसका fear उसने घोड़े पे फेंक दिया. Now the question is कि घोड़े पे क्यों फेंका? What's the problem with the father जो इतना heavy है? Why can't he be afraid of the father directly? Why does has to be a horse in between? फिर फ्रॉइड क्या करता है, लिटिल हांस को अपने पास बुलाता है, राइट? एंड फ्रॉइड डज समथिंग कॉल्ड ड्रीम एनालिसिस. लिटिल हांस से पूछते हैं यार तुम कोई ख्वाब देख रहे हो आजकल? इफ यस डू लेट मी नो. सो फ्रॉइड इंटरप्रेट्स लिटिल हांस ड्रीम, राइट? सो हांस कहता है कि भाई देयर आर मेनी ड्रीम्स आई हैव सीन. One of the dreams is that I remember correctly अगर मैं सही से बता रहा हूँ, but the theme is कि there's a giraffe, right? And there's one small giraffe, one big giraffe, right? And you know what? Okay, the big giraffe like crumples, yeah, like squishes the small giraffe, right? And then there's another dream where you know what? Uh, Hans is in the bedroom, ठीक है ना, with his mother, ठीक है, and the father is not in the bedroom, ठीक है. Now in the dream, ठीक है ना, Hans has feelings for his mother, ठीक है, and father obviously has feeling for the mother as well क्योंकि वो wife है उसकी. So this phenomenon of having feelings of your mom is called the Oedipus complex, ठीक है ना, ठीक है, having feelings for mother. It's for boys. And अगर लड़की को if the girl develops feeling for the father, as in daughters develop feeling for the father, इसको फिर electra complex कहते हैं, right? For your information, feelings ठीक है ना. अभी हम लेकिन इसकी बात करें क्योंकि there is no daughter. So Hans has feelings for the mom, ठीक है ना, in his dream, and his father is angry with Hans, ठीक है ना, in the dream. So what happens? कि Hans then sees his father as a rival in the dream. Because obviously they're both competing for the mother. So having that dream taken on, Hans now has anxiety. Okay, you know what? My dad will find out. And if he finds out that I am competing for my mom, ठीक है ना, my father is going to do something very bad to me, ठीक है ना. So little Hans then develops something called castration anxiety. Castration anxiety. That you know the father ठीक है ना will cut off Hans's genitals. ठीक है ना. Hans has that concern now. God forbid if my dad finds out that I like my mom, in the dream, my father in real life would cut off my genitals. So like Hans has that anxiety now. अब करता क्या होता क्या है? ठीक है ना. Let me take you back one chapter. I know थोड़ा बहुत overwhelming है. I'm gonna tie everything up, but I want you to understand where Freud is coming from क्योंकि like Freud की theory जो है doesn't make sense. So I'm going to tie everything that makes sense for you guys. So if you remember Freud का जो explanation था OCD का, हम second stage फिर anal stage, right? Third stage की थोड़ी देर बात करते हैं. The phallic stage. If you see the picture, the boy is observing the father, right? If you can see the picture, the boy is observing the father. And इसकी description क्या है? The child learns the difference between males and females and becomes aware of the sexuality, as in he becomes aware of his gender. That happens in the third stage. Now, what happens if you have this concept in mind?
हंस, ठीक है ना, wants the mother. हंस की जो उम्र है मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट आई डू नो कि इसकी उम्र इसके कहीं ना कहीं बीच में 3 to 7 के कहीं ना कहीं दरमियान फॉल करता है. So according to Freud, Hans is in the phallic stage. So he wants the mom, right? So what he will do to try to get the mom, he will try to copy dad so he can become dad, right? Because mom likes dad, so if I want mom, I need to become dad. How will he become dad? Enter the phallic stage. Phallic stage के अंदर आप क्या करते हो? Kids become aware of their gender roles. What do you mean? What do I mean? इसके अंदर जो लड़के जो होते हैं ना, वो गाड़ी बाप की तरह चलाना, टाई बाप की तरह लगाते हैं, ठीक है ना, शेविंग फॉर्म अपनी शक्ल में लगाते हैं. लड़कियां क्या करती हैं, अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, पाकिस्तानी कल्चर के लड़कियां जो दुपट्टा ओढ़ना शुरू कर देंगी, अम्मी की तरह बनना शुरू कर देंगी, रोटी आटा गूंदना वाला गेम खेलना शुरू कर देंगे, राइट? लाइक दे प्रिटेंड कि देयर मॉम, they do the things जो अम्मी अब कर रहे हैं खेल में. Hans will do the same thing जो उसका बाप करता है, वो खेलने में ना अब्बू को इमिटेट करेगा, so he can become dad, if that makes sense. So Hans is trying to become dad through the by imitating him because of the phallic stage. यहाँ पे तुम gender role identify करते हो. All right. So, long story short, Hans's Oedipus complex के dream के अंदर he saw himself having feelings for mom. Now in real life, Hans is scared of his dad क्योंकि अब्बू को लगता है कि अब उस Hans को लगता है अब्बू को पता चल जाएगा, then he will castrate Hans. इस वजह से he has castration anxiety. On the other hand, Hans is also trying to copy his dad क्योंकि he wants the mom. So in order to get the mom, I need to become dad. Makes sense. All right. Now अभी तक पूरी कहानी ठीक है ना. Why then Hans needs to be scared of horses? Why? Why can't he be just scared of that directly? क्योंकि असल मसला dad से. All right, here's the thing. All right, so if you remember this ego, super ego, ठीक है ना, please you need to remember this. क्योंकि it's Freud, right? So ego, super ego कहीं नहीं गया. ये अभी तक है. There's an id, there's an ego, there's a super ego. All right. So there's something I want you to realize again. Freud कहते हैं कि there's 3 aspects of your mind. ठीक है ना? There's something in your consciousness, ठीक है ना? Things that you're aware of, something in your pre-consciousness, ठीक है ना? Something that you are not aware of yet, but you can recall if you try hard enough to remember it. And there's something called unconscious, जहाँ पे it's a part of your mind that you cannot access. चाहे कुछ भी कर लो, you cannot enter, and तुम वहां से जितनी भी चीजें ना तुम निकाल नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो जाए. अनकॉन्शियस के ड्रीम्स आती हैं, राइट? अनकॉन्शियस के ड्रीम्स होती हैं, आपके इड, ईगो, सुपर ईगो होता है, ठीक है ना, वहां पे मौजूद होता है. ट्रॉमेटिक मेमोरीज होती हैं, राइट? अर्ली चाइल्डहुड मेमोरीज होती हैं, आज जो आप भूल गए, नॉट नेसेसरी ट्रॉमेटिक, लेकिन जो चीजें भूल गए वो अनकॉन्शियस में चले गई. और क्या होगा तुम्हारे साथ, या एंजाइटी जो भी है, ठीक है. ऑलराइट, नाउ लेट्स लुक एट अभी तक जो चीजें हमने डिस्कस की, कौन कौन सी चीजें अनकॉन्शियस से निकली हैं. हैविंग अ ड्रीम दैट आई एम विद माय मॉम, ठीक है ना, ये चीज अनकॉन्शियस से निकली थी, ठीक है. ऑलराइट, क्या कहते हैं, कैस्ट्रेशन एंजाइटी, माय फादर विल कट ऑफ माय जेनिटल्स, राइट? ऑलराइट, एंजाइटी ये भी अनकॉन्शियस से निकली है, सही है. Alright, try to copy the dad to become the mom, right? So whatever यहाँ पे हांस करने की कोशिश कर रहा है, right? जो इसका मोटिव है ना, I'm gonna tell you इसका मोटिव कहाँ से है. Alright, it says कि भाई I want pleasure, right? So according to Hans's scenario, it क्या कहेगा? You know what? Do whatever you must to get the mom. So क्योंकि it just cares about the pleasure. Uh, super ego is going to talk about moral principles. You know what? This is a bad idea. You just don't. Uh,
get together mom. It's just not possible, right? So सुपर ईगो मना करेगा कि भाई अम्मी के साथ सीन चलाना बहुत खराब बात है, ऐसा नहीं करते, ठीक है? So there's gonna be a debate. There's gonna be a conflict. Remember the word conflict, ठीक है ना? It and super ego फिर लड़ेंगे. It कहेगा भाई नहीं 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 अम्मी के साथ सीन चला. सुपर ईगो कहेगा नहीं 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 अम्मी के साथ सीन चलाना बुरी बात है. ईगो क्या करेगा यहाँ पे जो है ना मिडल रास्ता ढूंढेगा. He's trying to ego will try to mediate the conflict. ठीक है, जिसकी वजह से एट को भी बुरा ना लगे और सुपर ईगो को भी बुरा ना लगे. यहाँ पे मसला क्या, देयर इज नो मिडिल ग्राउंड, राइट? मतलब यू हैव टू साइड विद सुपर ईगो, राइट? कल्चर 1909 की बात कर रहा हूँ, वहां पे कल्चर ऐसा था, whatever. There's just no way you can make it happy. So ego क्या करेगा? Ego now is gonna have extreme anxiety. क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट मीडिएट नहीं कर पाएगा. ही कैन नॉट फाइंड द ईगो जो है मिडिल ग्राउंड नहीं ढूंढ पाएगा. सो इसको एंग्जाइटी डेवलप होगी. कौन सी एंग्जाइटी डेवलप होगी? राइट, कैस्ट्रेशन एंग्जाइटी डेवलप होगी, ठीक है ना? ऑलराइट, कैस्ट्रेशन एंग्जाइटी डेवलप होगी. फिर क्या हो गया इसको? फिर कैस्ट्रेशन एंग्जाइटी से किसे डर लगना लगेगा? हु इज गोइंग टू कैस्ट्रेट हैंस? द फादर is going to castrate hands, right? All right. So basically, now this is the source of phobia from of the dad. Ultimately, this is why Hans is scared of his father. But Hans को ये पता नहीं लगना चाहिए. Hans should never know this is happening, right? So ये सब चीजें Hans के unconscious, Hans को पता ही नहीं कि इसके साथ ये चल रहा है, right? That's why everything is in the unconscious. So सिर्फ इसके consciousness में क्या है? I'm scared of the horses. Underlying issue क्या है? सारा का सारा ये, ठीक है? एंड चाहे जितना कोशिश करेगा ना हैंस मालूम करने के लिए मुझे घोड़े से डर क्यों लगता है, अपने फ्रेंड्स को पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि ये चीज खास को कभी पता नहीं चलनी चाहिए. क्योंकि अगर जिस दिन पता चल गया ना ये चीज, अगर सामने कॉन्शियसनेस में आ गई, इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा, बेचारे का मेंटल ब्रेक डाउन हो जाएगा. इसकी लाइक हिज माइंड कैन नॉट हैंडल इट, राइट? सो Hans doesn't need to know this. All Hans needs to know कि he's just supposed to be scared of his horses. Think about this. घोड़े से डर लगेगा, बाप से भी डरेगा, ठीक है ना, अम्मी से भी दूर रहेगा. आसान तरीका है. But Freud wants to fix this issue, ठीक है ना? तो Freud tells his writes in his note कि भाई हांस जो है is scared of horses, लेकिन जो असर डर जो है ना वो बाप की वजह से डर है. क्योंकि हांस is scared के फादर जो है ना कैस्ट्रेशन एंग्जाइटी करेगा. क्यों कैस्ट्रेशन एंग्जाइटी कहाँ से आया? क्योंकि ईगो जो है ना इड एंड सुपर ईगो के बीच में कॉन्फ्लिक्ट मीडिएट नहीं कर पा रहा. क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड हांस इज ऑडिपस कॉम्प्लेक्स. इट कहते हैं कि भाई अम्मी के साथ आप चले जाओ. सो दिस इज द इड एंड सुपर ईगो कहते हैं कि दिस इज अ बैड आइडिया. और ईगो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट मीडिएट नहीं कर पाता, तो ईगो विल नाउ हैव एंग्जाइटी, जिसके से अब्बू से डर पैदा हो जाएगा. बट बिकॉज अगेन ईगो नीड्स टू प्रोटेक्ट ईगो नीड्स टू प्रोटेक्ट हैंड्स. सो ईगो क्या करेगा? एक और चाल चलेगा. ही इज गोइंग टू यूज अ डिफेंस mechanism. You guys are still following me. I'm going to tie this later together. Defense mechanism क्या होता है? Anything that you do to protect yourself from anxiety. Example, किसी के funeral है, right? बर्दाश्त नहीं हो, लोग हंस गए. होता है ना कि तुम क्या कहोगे, यार कैसे लोग funeral में हंस रहे हैं. That's the defense mechanism. Uh, for example, you can find someone who, like मुश्किल हालात के अंदर they're going to shop, they're going to eat, right? They're going to call a friend, they're going to procrastinate, शायद वो काम कर ही ना जिसके सबको टेंशन होता है. They're going to, what, pray excessive namaz, ठीक है ना? They're going to क्या कहते हैं, maybe ask someone to pray for them, right? Maybe they're going on a long walk, maybe they'll go to their mom's house, maybe they look at something that reminds them of childhood, maybe they smoke, maybe they do drugs. Whatever you do to remove the anxiety, that technique is called defense mechanism. And right now, Hans does have anxiety caused by his father, ठीक है ना? But he shouldn't know that. पता चल गया ना कि मुझे अब्बू से मसला है और anxiety हो जाएगी. So ego is going to make sure कि Hans is protected from this. So किस तरह करेगा? There's a defense mechanism that's going to be used known as displacement. Displacement क्या होता है? You take one thing and put it on the other.
So you take the fear of father and displace it onto horses. Okay? So that's how the phobia was displaced, and that's how Hans developed the fears of horses. All right. So long story short, Hans has Oedipus complex. सही है जिसकी वजह से Hans has castration anxiety, right? जिसकी वजह से he has fear of his dad. ठीक है. But because the conflict between it and superego cannot be mediated, the ego cannot handle the conflict. So ego, what will try to do is going to use a defense mechanism, right? जिसकी वजह से हांस को अब्बू के डर के बजाय गोड़ से डर लगना शुरू हो जाएगा. That's long story short. इसमें कोई मसला? Can you repeat the question? मतलब जो explanation है, right? Are you able to follow that? या कुछ समझ भी नहीं आया, सब नहीं समझ में आया. All right. सो फिर सीआई में क्या लिखना है? हमें ऑडिपस कॉम्प्लेक्स लिखना है, हमें क्या लिखना है? ठीक है ना. सीआई में क्या लिखना है? ये वाला जो पैराग्राफ है, ठीक है ना. सो डिफेंस मैकेनिज्म होता है, ठीक है ना, टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ अगेंस्ट द एंजाइटी. ऑलराइट, दिस इज अच्छा. बेसिकली इफ यू लुक एट दिस, conflict between id and ego नहीं होता, id and super ego होता है, right? Remember, ego doesn't fight with anyone. सुपर ईगो नहीं डरते हैं, तो लाइक ईगो की जगह यहाँ पे सुपर ईगो लिखोगे, राइट? ये गलत लिखा हुआ है. Unresolved conflict between id and super ego. So ego will use the displacement technique, right? He's going to like rechannel the anxiety, yeah, rechannel the phobia, yeah, displace the phobia on one thing to another. ठीक है ना. जिसके अंदर Hans had fears of horses, which was displaced from fear of his dad. Long story short, right? अगर थोड़ा और रिस्पॉन्स देखना, सो बेसिकली ये तो पूरे मैकेनिज्म है, राइट? अबाउट हाउ डज फोबिया गेट टू डेवलप. यहाँ पे हांस की कोई बात नहीं है, राइट? अगर तुम्हें हांस के बैकग्राउंड के अंदर जाना तो तुम ऑडिपस कॉम्प्लेक्स लिख सकते हो कि हांस हैड ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, वेयर इज फीडिंग फॉर हिज मदर, जिसके वजह से हांस हैड फियर्स ऑफ फोबिया. फिर उसके बाद ये वाला पैराग्राफ लिख सकते हो. All right, so again, it's 1909, and you know what? This explanation of phobia was, everyone accepted it largely. जो भी वहाँ पे psychologists थे, right? They agreed कि हाँ यार ऐसा हो सकता है. ठीक है ना. तुमने अगर classic meme देखा होगा, अगर like if you follow memes, इंटरनेट पे फ्रॉड की कहीं शक्ल देखी होगी, right? उसके मीम एक बना हुआ कि फ्रॉड की शक्ल है, नीचे लिखा हुआ योर मदर, राइट? तुम्हारी अम्मी. So according to Freud, everything happens because you have a problem with your mom or your dad. Right? That's the meme. That's the joke. Anyways, uh, so now two problems with Freud's explanation for phobia. Number one, there is no scientific evidence that superego and ego exist. Right? You cannot solve scientifically. So that's number one, a problem. Number two, uh, ये case study थी, right? Hans की, may not be generalizable. पहली बात 1909 की बात है, right? जिस जमाने में हुआ था ये 1909, it was very conservative cultures, like very 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 open, इतना open नहीं था, right? Now it's like 2020, right? In many parts of the world there's same gender marriages legalized, right? So थोड़ा बहुत open culture हो गया. So I don't know, like, if people get into relationship that seemed inappropriate in 1909, ठीक है ना, may not seem appropriate today. तो इसका मतलब है कि बंदा शायद एंजाइटी डेवलप नहीं करेगा. So that could be an issue. मुझे 10 सेकंड दे दो, एक मिनट.
All right, guys. क्या कहते हैं, yeah. So कल्चर चेंज हो गया, राइट? सो हाँ, उसको इसलिए डर लगता था बाप से क्योंकि ये उस वक्त अप्रोप्रिएट नहीं था, राइट? तो मे बी, ठीक है ना, आजकल के ज़माने के अंदर 2020 के अंदर व्हाट मे बी इन अप्रोप्रिएट 1909 मे नॉट बी दैट इन अप्रोप्रिएट 2020, सो मे बी people may not develop phobia because of this particular issue. So what I'm trying to say is कि टाइम वाइज जनरलाइजेबल नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि ज़माना बदल गया है, एंड कल्चर वाइज भी जनरलाइजेबल नहीं होगा क्योंकि उसका कल्चर अभी तक का कल्चर बदल गया है, एंड ऑब्वियसली बिकॉज एक ही बच्चा है, तो उस लिहाज से भी जनरलाइजेबल नहीं हो, सो देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम जनरलाइजेबिलिटी, ठीक है ना। दूसरा मसला क्या था, साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, यू हैव नो साइंटिफिक क्लेम टू बैक इट अप, सो ये मसला है। या उसके अलावा इफ यू इवैल्यूएट फ्रॉइड, इट इज रिडक्शनिस्ट 100%, क्योंकि ऑब्वियसली फ्रॉइड से पूछो भाई बच्चा हाँ को फोबिया क्यों है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देगा भाई एड एंड सुपर ईगो के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है या स्कॉर्डिपस कॉम्प्लेक्स है, आगे पीछे कुछ नहीं देखेगा, नो बायोलॉजिकल, नो cognitive elements, no, not even behavioral elements, so nothing like that, ठीक है ना। So it's completely reductionist. um, क्या कहते हैं, is it deterministic या free will? See, Hans, as I told you, has no control over this. Hans को पता ही नहीं है ना क्या हो रहा है, क्योंकि सब unconscious में। सो क्योंकि ये सारी चीजें एड ईगो और सुपर ईगो के बीच में हो रही है जो अनकॉन्शियस में, द थिंग दैट यू कैन नेवर एक्सेस, सो ये जो सारा मैकेनिज्म ऑफ फोबिया ये बेचारे हांस के कंट्रोल में नहीं, हांस इज अनअवेयर ऑफ दिस, तो हेंस इट इज डिटरमिनिस्टिक, ठीक है। आई एम गोना रीस्टार्ट द मीटिंग क्योंकि यहाँ पर टाइम लिमिट अप हो गया, आई एम गोना बी राइट बैक विद यू, तो मैं रीस्टार्ट कर रहा हूँ।